फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए Hello, guys. हमको Lata करीब Mangeshkar ji, the melody से, queen and the nightingale of India, passed away on Sunday, February 6th नसीब में this year. ये She is no more, बात but for billions of her हो न fans who heard her sing, हो, she would always be alive शायद and will फिर इस live on through her voice and her love जन्म for her country. में It was sad that she died out मुलाकात of हो multiple न organ failure after being in the हो, hospital for about 28 days after contracting COVID and pneumonia. She got a full state funeral and with full state honors, and the nation observed 2 days of national mourning on her death. The Prime Minister of the country, a lot of political dignitaries, and many people from the film and music fraternity, and thousands of her fans were there while the live telecast of her funeral was being shown. We were all glued to the television. I loved when A.R. Rahman, in his tribute, mentioned that Lataji uh, is so much part of her soul, so much part of the Indian consciousness and part of the Indianness, and for Hindi music, Hindi classical music, and all the songs. And her void will never be filled again. At Wonder Woman Wednesday, we thought we would give a tribute in our own way by inviting two singers today who are our VIP members. They are Kakoli and Prerna Jakatdar. Welcome, Kakoli. Welcome, Prerna. Thank you so much. Thank you. Let me tell Thank our you, Mandeep. members, Kakoli is a techie with a penchant for food, family, friends, and passion for music. That's why we have her here. And Prerna is a passionate music lover as well, and a homemaker by choice and an avid reader. So, ladies, as I mentioned to you, I wanted to have you girls to give a tribute to Lataji today, but also listen to your story, how you got into music. So my first question to you is, Kakoli, that where did you spend your childhood years, and when did you start your formal training in music? So, Mandeep, I was born in Bhopal but completely raised in Delhi. Like till I came to Canada in my late 20s, I was in Delhi. And my first memory of music, learning music or even humming music, is that it was my sister who was the singer in the home, and she used to learn music, and I used to hum. I was like a shadow of my sister, tag along sister. Whatever she has to do, I will do that. So I used to hum along with her. But at the same time, I was singing a lot in school, and that was grade 1 or grade 2. I was very popular in school. And the first time my parents realized that actually I sing was when my music teacher had taken me for an inter-school music competition. That was not told to my parents. When the PN came and dropped me back at home, my mom was, where were you? I was like, I had gone for a competition to that other school. तो वो उनको पहली बार पता चला कि she also sings, so why not get her also included in the formal training. So that is my memory. And as we went along, we learned from different music teachers, and Was it eventually I started. Hindustani? Sorry, is this Hindustani classical or was it? Uh, it was, yes, not exactly very structured Hindustani classical I started with. So in all Bengali middle class educated homes, you learn music. We did Rag Pradhan songs, then Nozrul Giti, Robindra Sangit, and Polli Giti, folk songs, patriotic songs, those kind of things. And eventually we went on to finally finding a guru in Delhi who was teaching structured classical Hindustani classical music from Gandharv's Mahavidyalaya. So I started that eventually. And parallelly, we were singing with different bands and performing, in different shows, in auditoriums, and then during occasions like Durga Puja and all, we were singing. So singing has been part of my life throughout, parallelly going on.
throughout. What about you, Prerna? When did you get initiated into music? मेरा भी कुछ काकोली की तरह ही था, जैसे वो बंगाली है और नॉर्थ में पली बड़ी है, वैसे ही मैं महाराष्ट्रियन हूँ। माय मदर टंग इज मराठी, लेकिन मैं नॉर्थ में कानपुर में पली बड़ी हूँ। तो वहां से ही संगीत सीखना शुरू किया, हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई वाज वेरी यंग, आई वाज what 6 or 7 years of age I started learning. I learned for few years, like 7-8 years सीखा, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर we got transferred. My mother got transferred to Maharashtra. We came here और फिर उसके बाद थोड़ा सा वो पीछे पड़ गया. But I was singing. स्कूल में, कॉलेजेस में, कॉम्पिटिशन्स में I was singing, लेकिन सीख नहीं रही थी. I was not learning. तो वो एक काफी साल मैंने उतने ही 7-8 साल सीखा, उसके आगे मैं सीख नहीं पाई जो मैं सीखना चाहती थी, लेकिन नहीं कंटिन्यू। You're being modest. I've heard that you used to get all the awards. लोग कह रहे थे कि first तो प्रेरणा ही है. Second, third can be. Yeah, because I used to sing. Singing was still in practice, but I was not learning. एक फॉर्मल ट्रेनिंग बोलते हैं वो मैं नहीं ले पा रही थी। मेरा गुरु उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि हमारे घर में बहुत गाने बजाने का माहौल था। सारे रिलेटिव्स गाते थे, जब शादी ब्याह होता था तो बड़ी महफिल सजती थी। और दूसरा गुरु रंगोली था, तीसरा गुरु चित्रहार था, तो उससे सीखते थे। That is true. Do you remember, Kakoli and Prerna, do you remember your first stage performance? How old were you and what was that song? तो ठीक है, I was very young, I was 7 years की मैं थी जब हमारे गुरु के साथ हमारा पहला स्टेज परफॉर्मेंस मैंने दिया था। Okay. और वो एक भजन था संत तुलसीदास का, Okay. ठुमक चलत रामचंद्र। वो मैंने पहली बार स्टेज पे गाया था, और मुझे अभी भी याद है कि जब लोग तालियां बजा रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तालियां क्यों बजा रहे हैं, ऐसे ही तो गाती हूँ मैं, मतलब प्रेरणा हो जाए, वो एक लाइन हो जाए, वो भजन की हो जाए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। Fantastic. That's lovely. Kakoli, when was your first stage performance and how old were you? Where was this? So, Mandeep, my first, public performance was actually at All India Radio studio. Right. Me and my sister, we had been invited to sing in the kids section, but unka thoda processing der hota hai, so by the time they got us, we were actually in the youth section. But because we sounded very kiddish, we got passed along. तो हमने एक भजन गाया था, and बिल्कुल आपने वो भजन नहीं सुना होगा. It's completely non-CD. So yeah, a very unknown bhajan we had sung, the two of us, which our Guruji had taught us. Was it in Bengali? नहीं, हिंदी में था. Okay. Kakoli, do you want to hum that bhajan to us? Yes, sure. I found the lyrics too. हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, कुंडल अलंकारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को. That was my first bhajan. देखिए कितना अच्छा माहौल बन रहा है, भजन से शुरुआत हुई है हमारी. And it shows that actually our parents, I don't know how to what extent we have been successful with our kids, but our parents did all send us to schools and colleges for the dances, and we all initiated with bhajans and things like that. That is so beautiful. There are so many. Prerna, this is something because you are in India. I know, Kakoli, you are sitting all the way in Ottawa in Canada. There are so many talent shows, singing shows, which are on mainstream television, national TV, regional ones today. What is your view on this? Is it inspiring children to learn more music? I guess I would call it inspiring to learn music. मैं इसको बोलूंगी कि बच्चों को परफॉर्म कैसे करना है वो सिखा रहा है, लेकिन संगीत का जो डेप्थ है ना,
वो Yeah. शायद मिसिंग है इन शोज में. दिस इज माय पर्सनल व्यू. आई एम श्योर ये बच्चे अच्छा गाते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन वो जितना सीखते हैं ना, उससे ज्यादा शायद मेहनत उनके कैसे वो परफॉर्म करेंगे, कैसे वो एक्स फैक्टर कैसे दिखेगा स्क्रीन पे, या उन्होंने क्या पहना है, उसके ऊपर शायद ज्यादा ध्यान दिया जाता है. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि नॉलेज ऑफ म्यूजिक कितना उससे मिलेगा, लेकिन हाँ परफॉर्म कैसे करना है स्टेज के ऊपर, वो शायद जरूर बच्चे वो देख के इंस्पायर होते हैं. Very good observation, actually. You see that, and sometimes when they eliminate people and show the emotions, it's so difficult. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली. difficult to see that. मतलब वो सिर्फ संगीत संगीत नहीं है, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी रहती है, एक इमोशनल उसको शेड दिया जाता है, और मतलब दे डेवलप द स्टोरी ना, धीरे धीरे आप उसके साथ में आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उन कॉन्टेस्टेंट्स के साथ में. Okay. Tell me, who are the singers who have inspired you both? So I'm going to start with you, Kakoli. Who are the people who have inspired you, in singing, and have you kind of kept in touch with those singers? Were they real life, or were they professional singers that you see up there? So, Mandeep, let me talk about the influence of cine music finally in my life, which came a little later. So, in our rich heritage of cine music, जो चार पिलर है हमारे, रफी साहब, किशोर कुमार, लता, आशा, these are like pillars of our music, huh? I mean, you cannot ignore them and go ahead. I don't, कोई और है मेरे favorite. So these are like our institutions. इनसे we all are very impressed. We learn, we try to imitate at times, but Yeah. we learn from them, right? जो उनकी And वो तो हरकत होती है favorite गाते thing. गाते लगता है कि हम लोग उसको अप्रिशिएट करें, और आप दोनों तो सिंगर्स हैं. Yes. So they have been definitely big influence, and of course in the new era there are so many more. I don't typically believe that trend कि आजकल गाने अच्छे नहीं बन रहे या अच्छे singers नहीं हैं. They're lovely singers, Sonu Nigam, Shreya, Arijit, Udit Narayan. These are my 90s के और अभी के favorite हैं, and they've definitely influenced the music I wanted to learn. And Chitra and Mahalakshmi Iyer from the south, to be precise. So that's my ये list of बताइए कि आपके पार्टनर भी गाना गाते हैं? Because you married to a Bengali guy, does he also sing? Was he singing and influenced you while he was dating you or proposing to you? Not at all, Mandeep. He is completely a non-singer, but he appreciates what I do and supports me a lot. In fact, his mother says that he used to sing Rabindra Sangeet, and he says he has no recollection. But he will point out to me, ये सुर ना तुम्हारा ठीक नहीं लगा, वहाँ पे ना आवाज नहीं चढ़ी, यहाँ पे वो नहीं गया, ये ना गिर गया. So he has. They're the best critics. Yeah, they're the best critics when it comes to. Yeah. Absolutely. Yes. So Kakoli, I'm going to come back to you to hum a song for us. But पहले मैं प्रेरणा से पूछने वाली हूँ कि who are the singers who have inspired you, Prerna? वही चार नाम, आप किसी जिसको भी संगीत में थोड़ी सी भी रुचि होगी ना, आप पूछेंगे सबको यही चार नाम तो जरूर बोलेंगे. आशा जी, आई एडोर आशा जी लाइक एनीथिंग. मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनके जितने गाने मैं गा सकूं, सुन सकूं, मुझे वो बहुत पसंद है. लता जी फॉर श्योर. उसके बाद रफी साहब हैं, किशोर कुमार हैं. मुझे मुकेश साहब के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं. उनके जो सैड सॉन्ग्स हैं या उन्होंने जो भजन कुछ गाए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और अभी न्यू एज सिंगर्स में आई लाइक महालक्ष्मी अय्यर, आई लाइक उदित नारायण. हाँ, उदित नारायण हमारे लिए नया है, ऑफ कोर्स अभी की जनरेशन के लिए वो बोलेंगे कि पुराने हो गए हैं. हाँ, तो उदित नारायण मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगते हैं. मुझे चित्रा अच्छी लगती है, मुझे कविता कृष्णमूर्ति अच्छी लगती है. देयर आर मेनी. मतलब वो लिस्ट ना एंडलेस लिस्ट है. आप पूछने बैठेंगी तो हम नाम लेते ही जिस तरह से इतने न्यू सिंगर्स और ये टैलेंट शोज हर साल 2-2, 3-3 को ऐड करते जा रहे हैं. And when you see somebody, the kind of reign of queens like Lata ji and Asha ji, Lata ji, they say that was singing for 70 years. And I mean, she was there for 80 years at an age of 92. But that really, really touched me. And the fact that she sang in like so many languages. So I think एक बात मैं जरूर लता जी की शेयर करूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक गाना सुन रही थी उनका जो तनुजा के ऊपर पिक्चराइज था. दिस वाज ईयर 1956 ऐसा कुछ, और उसमें तनुजा जी शार लेके निकली हैं एंड शी इज जंपिंग ऑन बेड्स एंड लता जी ने उनको प्लेबैक दिया है. कट टू 1995, जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनकी बेटी गा रही है, काजोल इज सिंगिंग वो ताल में जरा मेरे ख्वाब, एंड शी इज जंपिंग ओवर द बेड्स.
सेम सिचुएशन, लेकिन सिंगर वही है, प्लेबैक उन्हीं का है. I think this is really gifted one. She took care of her voice. She was very committed and determined to music. This is seldom, she had everything. I think जो लोग कह रहे थे वो सरस्वती पूजा के दूसरे दिन चली गई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि माँ सरस्वती चली गई, और इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में लोगों ने कही. I was glued to the television for those 2 days. It's like all our, everybody was feeling so low. We grew up with that voice, and fortunately she continued to live with us. So आप दोनों एक एक कोई हमें लता जी का सुंदर सा गाना सुनाइए, थोड़ा थोड़ा. काकोली, आप शुरू करेंगे? Would you please start? Sure. So Mandeep, I would like to do a semi-classical song which was directed by her brother Hridaynath Mangeshkar. Sunyo ji araj mariyo. Yay! You sing so well, and I love the fact that you always sing something which is classical. That's nice, semi-classical. All right, Prerna, अब तुम्हारी तरफ से होगा एक लता जी का सॉन्ग. जी बिल्कुल, ये मेरा बहुत पसंदीदा गाना है. लता जी ने गाया है, म्यूजिक बाय सलील चौधरी जी, जो अगेन मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं. फिल्म का नाम है परख. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना. Hey, that's my mom's favorite Very song. nice. I love it too. I know, मेरी mom को बहुत पसंद था जब वो young थी. Apparently, बहुत ही सुंदर song है ये, बहुत difficult, बहुत difficult गाना है. उन दोनों ने जो गाने जो choose किए हैं बहुत ही difficult वाले choose किए हैं. तो मुझे ये बताओ, both of you are now part of a quartet which keeps posting, and for all those members who are not part of it, let me tell you that Kakoli and Prerna are part of this quartet called Harmonica, and there are two gentlemen who are part of it, and they post fantastic songs at the Harmonica, and they've recently posted a very nice as well for Valentine's Day. I could do that. Tell me, how do you guys get the time? You all have your life, and then you have children, and you manage your household chores, and then you come back and practice, and you're in different time zones. So how are you managing this? I would love to know. मुझे तो लगता है सबसे पहला क्रेडिट हमारे हस्बैंड्स को और हमारी फैमिलीज को देना चाहिए कि वो बेचारे परेशान हैं लेकिन बोल नहीं सकते. Mandeep, what I say is that we are lucky that we still have spouses. जो हम करते हैं हारमोनिका के पीछे, we still lucky they're still with us. Look at what do your children say about this? Your passions for singing. Prerna, why don't you tell me? My daughter is very supportive. Even my son is, लेकिन वो थोड़ा सा भी टीनेजर है, थोड़ा सा वो अपनी दुनिया में ज्यादा रहता है.
लेकिन my daughter is really supportive. If I'm singing, if I'm practicing, she'll make sure कि कोई घर में आवाज ना करे. बाहर जाके बताएगी कि पापा मम्मा गाना गा रही है या दादा मम्मा गाना गा रही है. अगर मैं उसको बोलूं बेटा प्लीज लाइट लगा दो या लाइट जैसे अभी नहीं आ रही, अभी वो होती ना तो वो भाग भाग के लाइट लगा देती, मुझे जैसे उठना पड़ा. तो शी इज वेरी सपोर्टिव, मतलब वो हर चीज में Are any daughters are like that. of the learning music? Sorry, Are sorry. any of your children also learning music? No, they are not. They are not. My daughter is learning dance, लेकिन म्यूजिक नहीं. And आपके husband बहुत supportive है, तो वो हाँ, वो सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स. मतलब पूरा क्रेडिट मैं देती हूँ उन लोगों को कि उनको मेरे पैशन से. आपकी मदर की तरफ से आया, right? राइट. Okay. Right. She was very supportive of your career. So Yes, that's yes, she was. fantastic. Kakoli, what about your children? Your son, does he My like? son, yeah. You know, it's so funny. I tell them that sometimes we practice a song too very much, and I come to know that when the next day he's singing one liner from that, and he's not good in Hindi. Oh my It's the God. time Yeah. to disco. The next day he's singing like that. I'm like, "तूने कहाँ से सीखा? You were singing down there." So my boys, my husband and my son, very supportive. Sometimes it happens that I take the center stage at home. They've just come back from their martial arts. They're very hungry and they want to get to the food. But Shubhashish will tell them, "Beta, wait, Mama is singing. Let her finish. After that, we'll go in and we'll eat." तो मैंने गाना फिनिश किया, वो फिर आराम से चुपके से घुसे, and so that is the typical scenario at home. And now at least I have the basement dedicated to my music. यहाँ पे आके Fantastic. I do my stuff, and you know, I try not to bother them, disturb them. But there are times when for harmonica, Mandeep, we do crazy stuff. रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक नहीं हुआ, मुझे मेरे को सिंगर ने बोला नहीं तुमने गलत वाला ज्वाइन किया है, फिर से जाके ज्वाइन करो. तब मैं खाना बना के आई हूँ. आई एम टायर्ड एंड ऑल दैट, बट आई विल don my dress again, go down, So you guys sing have again. disagreements as well between the quartet as to who's singing how and whatever? Yes, Yeah. yes, we do decide everything. Everything is decided in advance. हम लोग एक प्रैक्टिस भी उसका करते हैं और उसके बाद हम फाइनल टेक जाते हैं, जिसमें हमारी काकोली मैडम बीइंग द परफेक्शनिस्ट, ड्रेस कोड बहुत हर चीज मतलब बहुत प्रिसाइसली हम लोग उसके बारे में डिस्कशन होता है. ड्रेस कोड को लेके काकोली बहुत ज्यादा ये रहती हैं. तो yeah. No, I think all the ones during the national days, the Republic Days and the Independence Days, you guys really carry the look, and even otherwise, that's fantastic. And the two gentlemen and the group also support it. And उनमें से एक के तो बहुत ही यादा है और हम लोग बहुत ही उनके fan हैं. So it is nice to do that. आप मुझे एक और गाना कुछ सुनाइए जो आप लोगों को पसंद है. प्रेरणा. Okay. फिर से लता जी का ही गाना है जो मैं हर कंपटीशन में गाती थी या कहीं भी मुझे बोला जाता था गाना गाओ तो मैं वही गाना गाती थी. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इसके थोड़े आगे भी गा दो अगर तुम्हें आता है तो. Good, good. ये बहुत सुंदर गाना है. जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा. Beautiful, beautiful. Thank you. Very nice, Prerna. बहुत Lovely. खूब, Thank बहुत you. खूब. Really nice. Thank you.
आप मुझे ये बताएं, ये आपकी जो डिक्शन होती है हिंदी की या बीच में उर्दू के कई कई बार लफ्ज होते हैं, आप लोगों ने हाउ डिड यू गेट दैट राइट? ये तो बहुत सहज भाव से आ जाता है, मतलब मेरे लिए बहुत स्वाभाविक है, मैं हिंदी में ही सोचती हूँ। और जहाँ पे रही हूँ, पली बड़ी हूँ, स्कूलिंग जहाँ हुई है, आसपास को जो माहौल था वो सब हिंदी का ही था, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि हिंदी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई हम जा रहे है बोलता है, तो मुझे लगता है मैं टोक दूं उनको कि है नहीं है होता है, तो वो बहुत सरल इसमें आता है, मतलब सहज But भाव different से। states in the country, we do have a problem with certain accents, and Bengalis and Maharashtrians and हाँ, Punjabis. We just हम्म, like हम लोग हमेशा हंसते हैं कि कई नाम को बिगाड़ देते हैं या हाँ हाँ। कई चीज़ों को जिस तरह से बोलते हैं। तो आपकी भाषा obviously बहुत ही साफ है, so that comes into it. काकोली भी आपकी तरफ से एक अच्छा सा गाना हो जाए। You have to tell me about how are you continuing your practice also in Canada? Oh, okay. So, yeah, sure. That was kind of a big achievement for my personal achievement, Mandeep. So, in 2002, we came to Canada and lost touch with music at all. New place, struggle, then young baby, job, very hectic job. I'm a techie. I used to go on call, rotation, and all that. But I remember that even at work, I used to hum a lot, and my employee, my colleague would say, "Are you meowing again? What are you singing?" Kind That's of a like, good word. yeah, that's the way. And in the Bengali community in Saraswati Puja, one day they really pushed me to the stage to sing. And why I say push is at that time I had lost the confidence completely to sing because I'd been so much out of touch. But जाके मैंने गाया, स्कूल का ही गाया, मुझे स्कूल के बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं. And this gentleman, very distinguished looking gentleman, came up to me. बोला आपने बहुत अच्छा गाया और आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी स्पष्ट क्यों है और नॉन बॉन्ग है आपका संस्कृत प्रोनाउंसिएशन. सो आई सेड सर मैं तो दिल्ली में पली बड़ी हूँ, वहीं पे स्कूलिंग हुआ था एंड ऑल दैट. लेटर आई केम टू नो दैट ही इज एक्चुअली अ वेरी बिग क्लासिकल एक्सपोनेंट. He has been an associate of Pandit Ravi Shankar, Birju Maharaj, all those people. He's sung with them. And he's actually a super techie. इसको उन्होंने passion रखा है और सिखाते हैं जो भी सीखना चाहे. So he invited me कि आप हमारे ग्रुप में आओ, join करो, गाना सीखो, गाओ. And then I guess last performance was in probably 1998. Then flash forward 2013, सर को मैंने join किया, Dr. Vinay Bhide. And this time I joined him not with the intention to perform or be there out on the stage, but for my spiritual sustenance and be connected to my music again. तो फिर उनके साथ गाना गाया क्लासिकल, उनसे ठुमरी मैं ज्यादा सीखती हूँ, सेमी क्लासिकल. And that has, so I'm with him right now, though for the last year the problems I had at home, I had to take a break, and I'm so Good. It's 8 years. craving to go You're back. continuing with that. That's fantastic. Yeah. And some people are surprised, अरे तुम फिर से इस age में you started learning. Oh, my best friend said, तो तुम कब तक सीखोगे? Like when will it finish? I said, as long as I live or he live, it's going to be there forever now. नहीं, बहुत Forever. बहुत आप कुछ सुनाइए प्लीज. Sure. This one again, it's a dedication to Lata ji and also a dedication to my sister, who is kind of my first guru, unknowingly. Lovely. And this is her favorite song. मैंने उससे ही सीखा था. Finally, when I started singing on Smule, I went and heard it from Lata ji first time. Thank you. बहुत ही popular number है, मदन मोहन जी का direction. लता जी की amazing voice. Like she was the voice. लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके
नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ब्यूटीफुल, लवली काकोली, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत अच्छा ट्रिब्यूट रहा लता जी को। आप जाते जाते हमें ये बताइए, व्हाट हैज बीन द रेलेवेंस ऑफ म्यूजिक और इज द रेलेवेंस ऑफ म्यूजिक इन योर लाइव्स? प्रेरणा? फॉर मी म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि मैंने जब फिर से खुद को री इन्वेंट किया म्यूजिक के साथ, जब खुद से वापस मैं कनेक्ट हुई, तब मुझे मेरे पास में टाइम था बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, अपने आप काफी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और मेरे पास बहुत, जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सोचने के लिए बहुत सारी चीजें थी। तो जब मैं वापस मैंने खुद को म्यूजिक के साथ कनेक्ट जब मैं हुई, तब मैंने देखा कि नहीं, अगर मैं इसमें खुद को बिजी रखूं तो शायद मैं अपना पैशन भी रिलीव कर पा रही हूँ, और मैं बहुत पॉजिटिव अंदर से खुद को महसूस करती थी कि थोड़ा सा गुनगुना लो, थोड़ा सा कुछ गा लो, कुछ नया सीख लो, वो भी एक फीलिंग आती थी कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू उस गाने के बारे में, उसकी कहानी, उसके और उसके ट्रिवियाज होंगे या जो भी चीजें हैं। तो मैंने खुद को वहां बिजी रखा, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस बस्टर है, कि जब आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो और आप एक अच्छा गाना सुन लो, एक अच्छा गाना गा लो ना, आपका काफी कुछ दिमाग शांत हो जाता है। This तो is फॉर a मी म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर। fantastic, fantastic. I hope you continue this journey. आपकी आवाज, and you're so gifted. There's so few people who can sing like that, and you can continue on this journey going forward. Kakoli, आप बताइए, आपका relevance क्या है म्यूजिक आपकी लाइफ में? I so agree with Prerna, Mandeep. But I will say that throughout the journey of music from childhood, it has been kind of evoked different emotions. Bachpan mein, it was a medium of getting adulation, admiration, and love of your relatives, friends. There, as we went to youth and I joined bands, it was more of camaraderie and that group feeling and doing something together, having fun. And as I matured, I won't use the word old, as we matured, it became more of sadhana and spiritual contentment. जब मैं ऑफिस के बाद सर के पास जाती थी गाना सीखने, and he would sing, I would forget that I've come to learn. I would just listen to him, and he would say, "Go, go." So I said, "Sir, you are giving me so much. The soul is getting quenched. The thirst is getting quenched." तो वो है. अभी music है मेरे लिए sadhana and stress buster, and it's been a medium of making such wonderful friends, Mandeep. Prerna hai, Absolutely, I Techie hai, agree to it. Mandeep hai. I can't imagine life without them now. Though we are international, I've not even met her in person yet. ऐसा लगता ही नहीं. Oh, yes, I forget that. Yes, you have to. So, But you can look forward to that, which is the most. yeah, absolutely. Absolutely. ऐसे चलते चलते दोनों इकट्ठे एक हमको म्यूजिक सुना दिए, एक कोई गाना सुना दीजिए जो दोनों गा सकते हो लता जी का. टू बी वंडरफुल टू सी कि कैसे विदाउट स्म्यूल तुम लोग का कैसे तालमेल बैठता है. रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसे रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसे अगन, रिमझिम गिरे सावन. I think every time you guys must be attempting. मैं तो singer नहीं हूँ, मगर you can figure out कि कितने difficult songs हैं each one, and the notes this lady would take to it is a different level. Amazing, unbelievable. Respect Yes. for her goes to a very different level. No wonder that globally and singing at the Sir Albert Hall and everything, she was the only woman. Really, really. And I love the fact that everyone kept saying that her songs are going to be amongst us and keeping her alive always. And such a beautiful tribute, both of you. Thank you so much for making the time.
I think all the ladies in WIP are going to have a treat with this on Wednesday. Thank you so much. Thank you so much Thank you for so much, inviting Mandeep. us. Yeah, and we were wondering where is the wonder in us. So I hope we were able to You're do being some modest. justice. You're being modest. I've always seen the wonder in you. If we don't have too many singers amongst us in the community, and I think you both bring in so much of talent in this, and I'm so proud to have you guys with us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much for the time. Thank you. Bye. Okay, पानी पानी पी लो सब लोग. Okay. Thank God Prerna is here. She's our Bollywood encyclopedia. That is what they call me. Confidently उसने हाथ ऊपर किया, सोचा कि चलो बोल He's दे. amazing. कहाँ से क्या न्यूज क्या टिप्स उसको मतलब सारे टिडबिट्स पता है, बहुत इंफॉर्मेशन है. मुझे सिर्फ गाना अट्रैक्ट नहीं करता है, उसके अराउंड जो स्टोरी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे. सही. I was listening to it. कुछ गुनाह इन लोगों के लिए चलो प्लीज सुनाओ. गुनगुना दो. Okay. जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे है अब हमें यादें बेहिसाब, बिना पूछे मेरे मुझे कितनी सारी जवाब.